afternoon. You're watching Breaking Ground and I'm Swati Joshi. The Maharashtra political landscape over the last few weeks has been dominated by a political showdown surrounding the Mughal Emperor Aurangzeb and his tomb. The release of the recent Bollywood movie Chhaava has only acted as a catalyst, triggering sharp political reactions. And amid the chorus for removing Mughal ruler's tomb, Maharashtra Congress chief Harshvardhan Sakpal has quoted controversy. He has compared the Chief Minister of Maharashtra, Devendra Fadnavis, to Aurangzeb. He said Fadnavis is as cruel as the Mughal king and that the Maharashtra Chief Minister governs the state based on religion. Listen to what Maharashtra Congress chief had to say that has triggered this controversy. औरंगजेब हा क्रूर शासक होता. औरंगजेबाने स्वतःच्या वडिलांना जेलमध्ये टाकलं. स्वतःचा मोठा भाऊ जो संविधानाच्या विचाराचा होता, सेक्युलर विचाराचा, दाराशिखा, याचा खून केला. नुसता खूनच केला नाही तर दाराशिखाचं मुंडकं कापून पूर्ण दिल्लीमध्ये फिरवलं. स्वतःचा लहाना भाऊ जो होता त्याला पागल करार दिला, त्याच्यावर विष प्रयोग केला, त्याला मारून टाकलं. आणि सदाकदा धर्माचा आधार हा औरंगजेब घ्यायचा. औरंगजेब कधी हजला पण गेला नाही आणि हा क्रूर शासक होता. आज देवेंद्र फडणवीसही तेवढेच क्रूर आहेत. सदाकदा धर्माचा आधार घेतात आहे, मात्र संतोष देशमुख सारख्या हत्या ज्या होतात आहे, जिथे खासदारांच्या लेकीबाळी सुरक्षित नाही, हा प्रकार आज दुर्दैवानं आज महाराष्ट्रात हा देवेंद्र फडणवीस सारखाच आहे. त्यामुळे औरंगजेब आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा कारभार एकसारखा आहे. Now, it was not just Congress that took potshots at the Chief Minister of Maharashtra. The UBT Sena in their editorial Samna slammed Devendra Fadnavis, the Chief Minister of Maharashtra, saying that the Maharashtra CM is misusing Chhatrapati Shivaji's name for politics and that his idea of Hindu Swaraj has been insulted. In its scathing article, those who are demanding the removal of Aurangzeb's tomb were labelled Hindu Taliban, who are poisoning the atmosphere in the state. On the other hand, Maharashtra CM retaliated against all his detractors and vowing to stop the glorification of Aurangzeb in the state. Fadnavis reiterated that the Mughal emperor's tomb has to be removed, but he also lamented that the grave is protected by the ASI and the state is forced to maintain it. आज यातनं एक संदेश निश्चितपणे जातो आहे की या देशामध्ये महिमा मंडन होईल तर ते छत्रपती शिवरायांच्या मंदिराचं होईल, औरंगजेबाच्या कबरीचं होणार नाही. हे देखील या निमित्ताने लक्षात घेतलं पाहिजे. आज हे ठीक आहे, खरं म्हणजे त्या औरंग्याची कबर कशाला हवी, परंतु आपल्याला देखील कल्पना आहे की एएसआयने त्याला 50 वर्षापूर्वी संरक्षित म्हणून अशा प्रकारचं त्या ठिकाणी स्थळ म्हणून घोषित केलेलं आहे आणि म्हणून त्याचं संरक्षण देखील करायची जबाबदारी ही राज्य सरकारवर आणि केंद्र सरकारवर येऊन पडलेली आहे. काय दुर्दैव आहे, ज्या औरंग्याने आमच्या हजारो लोकांना मारलं त्याच्याच कबरीचं संरक्षण आम्हाला करावं लागतं. Nilesh is joining us on the broadcast with more details. The entire controversy over Aurangzeb has once again been reignited, and this time around, the Chief Minister of Maharashtra was compared to Aurangzeb. Yes, he has hit back, reminding that it was the UPA that put the tomb under ASI, and that's why the state is forced to maintain it. Well, yes, this is the third week of Maharashtra budget session. There are a range of issues that is being discussed into the assembly session, but the most talked about is of Aurangzeb and his tomb. And now CM Fadnavis have been somewhat given counter by the Mahavikas Aghadi leaders and Congress leaders, and UBT leader Sanjay Raut has now compared CM Devendra Fadnavis with that of Aurangzeb, thus adding more fuel to the fire which was earlier raised by Abu Azmi. Now remember, a lot of controversies surrounding Aurangzeb. Demand on one hand is to raise down his tomb, to remove his tomb out of Maharashtra, and on the other hand, the leaders from the Congress party are now stating that how the regime of current government, that is, which is led by CM Devendra Fadnavis, is somewhat behaving that of Aurangzeb by the condition that the law and order situation in the state of Maharashtra is somewhat getting downfall. Such instigating comments are being made by ministers sitting in the government is somewhat drawing perspective. But there is retaliation coming in from the BJP. Nilesh, stay on with us. Let's also listen into the reactions coming in from the Bharatiya Janata Party leaders who are coming down heavily on the Maharashtra Congress chief.
महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस जी की तुलना औरंगजेब से करते हैं। कहते हैं वो औरंगजेब की तरह क्रूर है, औरंगजेब की तरह काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी की औरंगजेबी मानसिकता का यह परिचय है। वैसे तो औरंगजेब की तरह कौन पेश आता है, कौन जिन्ना की मानसिकता लेकर बजट में भी हिंदू मुस्लिम करता है, ये सबके सामने है। पर सवाल ये बनता है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, जो एक संवैधानिक पद पर बैठे, उनको इस प्रकार की वो ये कहना चाहती है कि जनता ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो औरंगजेबी है। मतलब ये जनता का अपमान है, महाराष्ट्र की जनता का अपमान। प्रधानमंत्री को भी 150 गालियां इन्होंने दी है, अब देवेंद्र फडणवीस जी को भी गालियां बक रहे हैं। ये दिखाता है कि उनकी मानसिकता संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति का अपमान करने की है। जो औरंगजेब की औलादे हैं उनके ही मुंह पे औरंगजेब का नाम आता है। कांग्रेसियों की जड़ें कहाँ जुड़ी हुई हैं वो किसी से छुपा नहीं है। अगर कांग्रेसी बार बार अपने मुंह पे औरंगजेब का नाम लाते हैं तो ये खुद भी औरंगजेब की ही औलादे हैं। Meanwhile, a chorus calling for removal of Aurangzeb's tomb is gaining momentum. Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde said it's the wish of lakhs of Shiv Bhakts to see that Aurangzeb's tomb is removed, who killed Chhatrapati Sambhaji Maharaj. Union Minister Ramdas Athavale also backed the suggestion. तर संभाजी महाराजांचं शौर्य आणि औरंगजेबाचं कौर्याची जी काय परिसीमा त्यांनी गाठली होती आणि अशा औरंगजेबाच्या आठवणी किंवा त्याच्या निशाणी या महाराष्ट्रामध्ये कशाला पाहिजे, ही भावना जी आहे ही या तमाम शिवभक्तांची, त्याचा आदर केला पाहिजे आणि त्यांची भावना बरोबर आहे। त्यांची भावना जी आहे तीच माझी भावना आहे। जो देशभक्त असेल, राष्ट्रभक्त असेल, त्यांनी औरंगजेबाच्या कबरीचं उदात्तीकरण करता कामा नये, कारण त्यांनी आपल्या देशावर, आपल्या महाराष्ट्रावर चाल करून आला। मुझे लगता है कि औरंगजेब एक बहुत नीच आदमी था और उन्होंने मतलब संभाजी राजे पर हमला करके उनकी हत्या करने का काम किया था। औरंगजेब की जो कब्र है तो उसको हटाने की मांग हो रही है। इतने सालों में तो मांग नहीं हुई थी, लेकिन अभी अभी छावा फिल्म देखने के बाद और पूरे देश भर में ये लोग देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी क्या करना है, माननीय देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे जी, अजित दादा पवार है, इन लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्माण ना हो, किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे, ऐसा निर्णय लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। And we have some breaking inputs coming in. Amidst political fireworks, the Vishwa Hindu Parishad and Bajrang Dal members hit streets today in Chhatrapati Sambhaji Nagar demanding removal of Mughal Emperor's tomb. Listen into some reactions. इस शहर को औरंगजेब का नाम निकाल के छत्रपति संभाजी नगर ये नाम देना चाहिए, ऐसी पहली जाहिर मांग किसी सभा में अगर किसी व्यक्ति ने, किसी महापुरुष ने की रही तो उनका नाम है स्वर्गीय बाला साहब जी ठाकरे। उनकी भूमिका थी कि इस शहर का नाम छत्रपति संभाजी नगर होना चाहिए। उसका आंदोलन लेके 25 साल तक लोगों ने लड़ाई की और उसके बाद में इस शहर का नाम छत्रपति संभाजी नगर हुआ और इस औरंगजेब का नाम इस शहर से मिट गया। उसी प्रकार से अभी ये जो कब्र है, ये कब्र यहाँ से हटानी चाहिए, ये हमारी मांग है। स्पष्ट रूप से एक ही मांग है कि छत्रपति संभाजी नगर में जैसे औरंगजेब का नाम निकालकर छत्रपति संभाजी महाराज का नाम यहाँ पे दिया गया, आने वाले समय में ये जो कब्र यहाँ पे है, औरंगजेब का जो निशान है, ये निशान यहाँ से निकाल देना चाहिए, यही हमारी मांग है बस। All right, so protests demanding removal of Aurangzeb's tomb intensifying across Maharashtra. These are visuals coming in from Pune, Nagpur and Nanded. We have Arunil joining us in the broadcast, and along with him, I believe, is Mr. Ramdas Kadam. Reactions coming in, BJP hitting out at all those who are making statements in favor of Aurangzeb. The recent one, in fact, is comparing the Chief Minister of Maharashtra to Aurangzeb. Well, if one topic or one issue that was supposed to basically drive out extreme reactions from the political parties in Maharashtra, that was obviously going to be Aurangzeb. Now we have seen BHP Bajrang Dal holding massive protest across Maharashtra, saying that we want Aurangzeb's tomb to be relocated. However, Uddhav Thackeray Shiv Sena in their mouthpiece Samna have it out at the BJP, saying that if there was one sign of the victory of Marathas over Aurangzeb, the
26 year of war that the Marathas basically fought under difficult circumstances and won over Aurangzeb. Aurangzeb's tomb in Maharashtra signifies the valor of Maharashtra, signifies their courage and victory as well. Now with me is Mr. Ram Kadam, BJP senior leader. Firstly, Congress Maharashtra chief has hit out at Devendra Fadnavis, the CM of Maharashtra, comparing him with Aurangzeb, saying that Devendra Fadnavis is also cruel like Aurangzeb, and the massive protest by VHP and Bajrang Dal. Their demand is that the tomb of Aurangzeb should be relocated to other place, not Maharashtra. How do you look at that? First, let me speak about Maharashtra Congress president. He should speak with his औकात. जो उनकी औकात है उस औकात पे बात करें. On the other hand, Honorable Chief Minister Devendra Fadnavis ji, who has got a different image, we say the Bhagwan Admi करके लोग उनको जानते हैं, and he has been just to make happy Gandhi family or hog limelight. He has been indulging into such kind of comments. Who knows him? Even his party, other MLAs, no one has accepted him as a president of Maharashtra. And that's the reason why, just to hog limelight, he has been speaking about Devendra ji in this in derogatory words. About VHP and Bajrang Dal's demand? See, we need to understand why and how this has started. When the person like Aurangzeb, who is a hatred personality, who killed his own father, who killed his own brothers, I don't think anyone will accept this kind of attitude. The way he behaved with our Raja Shiva Chhatrapati and Raja Sambhaji Raje, we cannot accept him at all. And when some politicians, they started the Jaikara, that is not acceptable in Maharashtra, that is not acceptable in India. That's an important point. That's a moot point. Does the government also support VHP's demand of relocating Aurangzeb tomb? See, as far as relocating or destroying that tomb, about this, our Honorable Chief Minister Devendra Fadnavis ji, he had given very clear message that our government will take action according to law. That's the point number one. And that tomb is tolerated, or that tomb is protected by the Congress with the ASI some norms. Well, Devendra Fadnavis certainly mentioned about the fact that how much ever the BJP wants it to be relocated, the tomb of Aurangzeb is being protected and by the ASI. Right, so that was Ram Kadam of the Bharatiya Janata Party. Thank you, Arnil, for getting us his reaction. He says hailing Aurangzeb is unacceptable and the maintenance is being done because it comes under ASI, which happened during the UPA rule or the Congress rule. Considering the sensitive situation, security has been beefed up in the locality and cops are on high alert. Times Now spoke to District Collector on security arrangements. Take a look. कुछ दिनों से पूरे जिले में, पूरे राज्य में जो चर्चा चालू है वो कबर को लेके, तो वो सिलसिले में जिले में कायदा व सुव्यवस्था जो है जो खराब न हो, इसलिए हमने बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं और पूरे जिले में हमने अलर्ट लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से घोषित किया है। लोगों को बताया है कि कोई भी अफवाह न फैलाए। सारे मुद्दे पे ध्यान दे रहे हम, क्योंकि कुछ आंदोलन की जो चेतावनी आ रही है या कोई निवेदन आ रहे हैं या कोई व्यक्ति या कोई संगठन यहाँ आके कुछ आंदोलन करने वाला है, तो प्रिवेंटिव मेजर्स भी हम ले रहे हैं और उनको भी नोटिस निकाल रहे हैं कि शांतता सुव्यवस्था यहाँ आके आप जो खराब करने की कोशिश